शो के जितने भी एपिसोड हो 30 मिनट्स के अंदर हो, बिकॉज आजकल ऑडियंस का टाइम स्पेंड भी एक्चुअली 40-45 मिनट 50 मिनट वर्क इतना नहीं कर रहा है. Like a more known figure in terms of the cast, but it's truly an ensemble. I don't think so it's my show alone. I think the show is a collaborative show. मैं घर से सुबह उठ के ये तो सोचूंगा नहीं यार आज मैं सपोर्टिंग एक्टर वाली एक्टिंग करूंगा, आज मैं लीड एक्टर वाली एक्टिंग करूंगा. मैंने तो वही काम करना है यार, मैंने तो उतनी शिद्दत डालनी है. Correct. I am not a very calm person in life. I'm sure you must have figured out in this little conversation that I've had. Hi Bhuvan, hi Sachinder. Hi. Shreyas this side. Welcome to Cinema Express. Hi Shreyas. First of all, congratulations for Janavar. आप दोनों कैसे जुड़े इस सीरीज के साथ और how was the association like? Where did it start? जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसको मैंने चूज़ नहीं किया, उसने मुझे चूज़ किया है. और ZTV नेटवर्क से कॉल आया था, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई और स्टोरी इतनी एक्साइटिंग थी जिसमें काफ़ी लेयर्स थे, तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास उसकी. मुझे तो डेफिनेटली ऐसे सब्जेक्ट पसंद भी हैं और करना भी चाहता था, और बाय गॉड ग्रेस मिल भी गया. I think the seed is absolutely from Z5 and I think Mrinalini, Akash, everybody. We've been wanting to collaborate for a long time. In fact, हम बहुत साल पहले सचिन सर और हमने एक शो साथ में करने वाला था. Unfortunately, वो हो नहीं पाया. अच्छा. पर किस्मत में लिखा था. And I think thanks to the makers and especially the creators, Mrinalini, Akash, everybody from the Z5 team. We've been wanting to collaborate for a long time, and then they narrated the show to me. I really jumped onto it because बड़ा मजा आया था मुझे सुन के. मुझे लगा काफी different है from any other cop drama that I've of late seen on screen. So I thought was there a specific thread to your character that you saw stood out for you while reading or anything like I think the whole the layering of the character is very different from not just what I've done before, of different than what I've been seeing of late. And I watch a lot of stuff because I think this is my home ground OTT. So I watch a lot of OTT. I have this habit of consuming a lot of content. And obviously, I think it's very necessary also for us. तो जितना मैंने देखा सुना था और पढ़ा भी था उसके हिसाब से मुझे काफी अलग लगा था. और not just my character यार, मैं I'm not one of those actors who just thinks about how heroic or how great my character is. I felt the story in entirety was really gripping. And I was sold there. Yeah. And one thing that is really interesting is we have seen you before prominently in Farzi, and here you play a cop, and both of those are like different sides of the law. So I wanted to ask you, both of those also operate from a different psychology, right? While preparing for the role in both these shows, and especially in Janavar, did you have to look at the psychology of your character to understand it better? And you obviously do your bit of research, you obviously do your bit of hard work, your homework, and you obviously have to tweak yourself. You know, just probably mentioning or patronizing it as two different sides of the law would be a very generic statement. And I feel that, you know, Feroz is a very different human being and Hemant is a very different human being. So I genuinely hope, you know, if the two of them are sitting together, they really will hate each other. Yeah. So that's the kind of drastic difference I've tried to create. अब वो कितना नजर आएगा, I don't want to, you know, say that myself. I want audience to be the judge of that. But obviously, you have to think in a different way. And not just with that, yeah, everything else that I've done of late, be it Amran, be it Chandra Champion, whatever other projects that I've been a part of is Addi. Every character that you get in, no, you have to unlearn the previous character. Because that is how you will probably try and create something new. So I feel it's like a painting. You've got to start from the scratch. Canvas empty होना पड़ेगा और वो होना पड़ेगा. मुझे लगता है कहीं तो commonalities होंगे सोच में भी, चाहे फिरोज की और हेमंत की आप commonalities लेंगे ना, तो कुछ बातों पे तो शायद वो agree करते होंगे. शायद अगर family values कह लो, he values his family, he used to value the family. तो अगर आप generic sense में बोलोगे तो हाँ, they're both. They're definitely on different sides of the law, but I'm sure every person, you and I will have similarities. Me and Sir has similarities. We have our own differences. You and I would have differences. So when you pursue a character, I think it's too big a jargon to say that, you know, I will understand the psychology of the character. I have not been able to understand my own psychology as a human being. I don't know what Bhuvan Arora thinks like. Yeah. I still am figuring out. So I think it's a very gradual journey. I think I always say this line, life is a lesson, you learn it when you're through. And I still have, you know, a long way to go. Right. So I don't know whether the psychology of the character is to be understood, but yeah, I definitely try to be as honest to the part what's been written by the writers
and try to envision the whole thing as how they saw it when they were writing it. Yeah. One thing that also stood out to me while watching it is the dialect that you kind of maintain. जी. We saw that even in Farsi you maintain a very different Bombaya dialect. Right, sir. What is the process of getting the dialect right? Because it is very important to the character and the world in which he is operating. It kind of enriches it further through how you say the dialogues. It is inevitable for me. I just can't operate without it. It is a prerequisite for me whenever I sign on to something. Be it Farsi. Farsi, thankfully, I've been living in Bombay. I was living in Bombay for already 8-9 years when I had done that show. So I was pretty much familiar with the way how Mumbai ka talk. And it's not very representational how we have typically seen in the movies. जाने का, आने का, करने का, done. So, sketchy ho jata hai. Yeah, exactly. It's very caricature. It's not caricature. It's also there is a division in Bombay that talks like that. I didn't belong to that division. So I had to keep it very, how do I say, very contemporary and also very relatable to people who live in Bombay. When it came to Janavan or any other project for that matter, Dupaiya, we had a language coach on board. He was teaching us Bihari. So we try to be, and I sit with the coaches and I make sure that, जितना पैन इंडिया लेवल पे उसको समझाने लायक रख के उसको ऑथेंटिक बना सकते हैं उतना करना चाहिए. आई रिमेम्बर आई वाज डूइंग माय फर्स्ट फिल्म एंड आई वेंट ऑन द सेट. मैं 2-3 दिन पहले चला गया जरा शूटिंग से. जयपुर में हमारी शूटिंग हो रही थी. शुद्ध देसी रोमांस की बात है. तो जयपुर में हमारी शूटिंग हो रही थी और मैं 1-2 दिन पहले चला गया और मैं वहाँ जाके ऐसे लोकल ड्राइवर्स के साथ बैठा रहता था और बात करता रहता था. तो वहाँ की भाषा, मैनरिज्म्स, तब एक्टिंग चरम सीमा पे थी. मतलब ऐसा लगता था कि करना ही you do your best to do whatever you can. तो मैं कर रहा था and all of that. And मनीष सर जो डायरेक्टर थे फिल्म के, I love him, I have so much love and respect for him. हमारी अभी भी बहुत बात होती रहती है. तो मैंने पहला सीन किया, मनीष सर मेरे पास आए, कहते यार भुवन तूने ना बहुत बढ़िया किया, पर क्या है ना मेरी फिल्म पैन इंडिया है. इतना अर्बन फ्लेवर नहीं, इतना अर्दी भी मत बनाओ कि ये रीजनल सिनेमा लगने लगे. बट उसका मतलब बैलेंस बनाते हुए अगर आप उसको ऑथेंटिक कर सकते हो, मुझे लगता है ये बहुत हेल्प करता है. इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर एन एक्टर टू लुक डिफरेंट ऑन स्क्रीन. करेक्ट. ठीक है, क्योंकि पहली बात क्या होती है, हाउ डू यू रिलेट विद एन ऑडियंस. वी आर नॉट मेकिंग अ साइलेंट फिल्म, वी आर मेकिंग अ फिल्म विद डायलॉग. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू रिलेट विद योर ऑडियंस विद इज हाउ यू स्पीक, हाउ यू टॉक. So I think अगर आप instantly उनको ये believe करवा दो कि हाँ आप उस region को belong करते हो, I think half the battle is won. Correct. Coming to you, Sachinder sir, you've edited a lot of shows before, I think, if I'm not wrong, CID. He's edited Filmistan, he's edited Jawani Jane Man, so many films he's edited. And worked in TV for a long time. And I wanted to ask you, what does being in a profession for such a long time, make you learn about filmmaking and especially about rhythm, because that is something which is very prominent in editing. What are your learnings in these years about it? Actually, I did 3-4 films also, and lots of shows edited. तो डायरेक्शन में मेरे ख्याल से जब मैं एंटर किया तो मुझे एडिटिंग बहुत सपोर्ट किया हमेशा, बिकॉज जब वो सेंसेस होते हैं एडिट के सेंसेस होते, तो आपको पता है कि आपको शॉट क्या लेना है. वो बहुत सपोर्ट किया और मेरे ख्याल से वो इसका जो आउटपुट भी है, मेरे ख्याल से हमें जानवर में मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज हमें बहुत छोटा सा एक टाइम पीरियड था जिसमें मैं इसको शूट करना था और बहुत कंटेंट बहुत था. और मिस्ट्री थी, इन्वेस्टिगेशन था, मर्डर्स था और उसके साथ में इमोशनल सब कुछ परफेक्टली करना, उसमें मेरे को एडिट ने बहुत सपोर्ट किया. तो मुझे पता था कि शॉट कितना चाहिए, कितना लेना है, कितने शॉट, कितने टेक. तो ये जो वो एक्सपीरियंस एडिटिंग से ही मेरे को उसमें आया. And I really think that editors make great directors, because Sachin sir की बहुत अच्छी क्वालिटी है, because he is so precise with how much he knows he is going to use. Correct. हमारा ना ऐसे साइन लैंग्वेज मिलता था, इसको काट दोगे ना तो मैं वहां से करता काट दूंगा मैं, तो टेंशन मत, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है मैं कहता था दोबारा लेते हैं, ये रखूंगा ही नहीं ना मैं, ये तो वो वाला रखूंगा मैं. सो आप ऑन सेट ही आपके दिमाग में एडिट चल रहा होता है. एंड वी हैव न्यूमरस एग्जांपल्स. राजकुमार हिरानी सर इज एन एडिटिंग पास आउट, संजय लीला भंसाली सर इज एन एडिटिंग पास आउट, मिस्टर सचिंद्र वंस इज एन एडिटर. सो आई हैव immense respect and I hope he has a glorious journey ahead. But also talk to me about the length of the episodes. As I was saying, we usually see shows that have episode length of 40-45. Why do you want to keep it to 20-25 and below 30?
नहीं, ये एक्चुअली मेरा कॉल नहीं था, ये जी नेटवर्क का ही कॉल था कि शो के जितने भी एपिसोड हो 30 मिनट्स के अंदर हो, बिकॉज आजकल ऑडियंस का टाइम स्पेंड भी एक्चुअली 40-45 मिनट 50 मिनट वर्क इतना नहीं कर रहा है जिस तरीके से लोग स्विच कर जाते हैं दूसरे शोज में या निकल जाते हैं। तो हमने ट्राई किया है कि इसको 25, 30, 21, 40, 30 के बीच में रखना है, जिससे एटलीस्ट अगर एक बार ऑडियंस घुसे तो पूरी तरीके से एपिसोड देख के निकले टाइट, और जितना हमें बोलना है उतना बोल के हम निकल जाए। ऑल्सो स्पेक्ट्रम ऑफ द शो जितना है ना हमारा शायद उसके लिए काफी है टाइमलाइन, ऐसा भी नहीं कि हमारे को फोर्स कर दी गई है और हमको ऐसा लग रहा है कि यार I feel the show requires a certain kind of pace, and I think the timeline of around 25 to 30 minutes per episode it works very well. If you want to drag it, you can drag it, and I won't really say you'd probably dig in deeper. You can still make it interesting, but I feel story को जितने time की जरूरत है उतने में कही जा सकती है. Fair, and that was like something very refreshing to see, as I said, because it becomes very difficult to watch beyond a certain time. And वो कोविड के टाइम पे हो गया है, लोगों ने देख लिए उस टाइम। अभी और ये बड़ा चैलेंज होता है, बहुत चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज टू वॉच। हाँ, आई मीन लाइक जितना कम टाइम में आपको इतनी बड़ी बात कहनी है, और हमारा शो इज नॉट अ वन डिमेंशनल शो, इट्स एक्चुअली डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, माइथोलॉजी, दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, देयर आर इनर बैटल्स, देयर आर पर्सनल लाइफ इश्यूज गोइंग ऑन विद द कैरेक्टर, देन देयर इज अ मर्डर मिस्ट्री टू बी सॉल्व्ड, द जॉब इज एट स्टेक. So many things with this timeline. I feel that kudos to Sachin sir. I think it's a fantastic job. Yeah, I think editing would have been difficult to make it understandable also, and also to keep. मैंने तो डर के हमारे देखा ही नहीं, इन्होंने मेरे को कहाँ काट दिया होगा। आपने देखा नहीं आपने? Also, one thing that I found really interesting about your performance, Bhuvan, is it has a certain therav. It doesn't tell you things up front. It is like very layered, it is quiet. तो वो जो ठहराव है performance में, especially when you're playing a cop who is supposedly a very outward character, what was the process of getting that ठहराव in your performance? Yeah, I think the battle needs to be more internal then. When you've got to play, I am not a very calm person in life. I'm sure you must have figured out in this little conversation that I've had. So I am not a person who's very calm. I am an extrovert person. I like to talk. In fact, I think I was probably the most notorious on set. I would, fool around with all the co-actors, pull their legs and all of that. I would obviously, सबका खाना खा जाते थे, खाना खा जाते थे, पूरे गांव का खाना मंगाते थे। तो मेरी बहुत आदत है. But when it comes to the job, you basically have to understand that आप उसको जितना एक्सटर्नल ना रख के उसको जितना इंटरनल करोगे, और ये बहुत एक फाइन लाइन मेंटेन करनी होती है, क्योंकि आप इस जरा सा भी ज्यादा करो ना, द कैरेक्टर स्टार्ट्स टू लुक डिसइंटरेस्टेड, एंड दैट बिकम्स वेरी ट्रिकी फॉर एन एक्टर, वेयर यू स्टार्ट टू फील दैट यार इस कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं हो रहा, वर्सेस हो रहा है बट ही इज मेंटेनिंग द काम. दैट्स हाउ द कैरेक्टर इज. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द डायरेक्शन पार्ट ऑफ इट ऑल्सो. सचिन सर ने बहुत वैसे हेल्प किया मुझे वो मैग्नीट्यूड कैच करने में कि कितना करना है कितना नहीं करना. बट आई थिंक अगर आप उस चीज को इंटरनलाइज, हमारे टीचर थे अरविंद पांडे जी, हमें FTI में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा था यार तुम्हारे अंदर होगा ना तो वो दिख जाता है. तो जितना भी काम है, जितना भी बैटल है, एंड ही सीन मच वर्स इन लाइफ, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है. Yeah. So I had to obviously remind myself that, and sometimes meditation, sometimes keeping yourself aloof from the people जहाँ पे जरूरत नहीं है, तो वो भी काम आता था. So जब सेट पे इतना चहल पहल रहती है तो उसके बीच हाउ डू यू स्टे सेंटर्ड, एंड व्हेन इट्स एक्शन हाउ डू यू? होमवर्क हेल्प्स यू. आप पहले जितना करोगे उतना आप सेट पे इजीली काम कर पाओगे. अगर आप वहां पे जाके एक्सपेक्ट करते हो, हाँ ऑब्वियसली यू कैन मेक इट बेटर, यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन थिंग्स ओवर देयर, बट आई रियली फील दैट यू नीड टू सेंटर योरसेल्फ बिफोर यू स्टेप ऑन द सेट. राइट. एक और चीज, जैसे आपने कहा, द सीरीज आल्सो टॉक्स अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. द कैरेक्टर यू प्ले कम्स फ्रॉम द ऑप्रेस्ड कास्ट. And it is also addressed in the first episode itself when one character says casteist remark and we see your expression. When you are playing, or this question is to the both of you, when we portray people from the oppressed community on screen, there is always this fear of showing them in a victimized way or showing them in a pitiable way. How do you avoid that while making the show? See, when you'll finish the show, you'll actually feel quite the opposite.
I think we've shown it in a very victorious fashion. And I really feel that, when people finish the show, and I hope you will too, after it's out, you feel that, we have to look beyond it. And I hope through our show, in whatever little capacity we've been able to make it possible, we represent that and people feel that. So I think that is probably a better statement to make when you've seen the whole show. I think on the basis of 2 episodes, it's sort of unfair to comment कि हमने उनको oppressed दिखाया कि नहीं. आप उसको पहले खत्म करो. I'm not saying you have put it in. I'm just saying there is this conversation that happens whenever we see films that are made on cast, that the gaze is not proper. I'm not saying you are doing it. I'm saying what is your take on the discussions that happen and how do you tackle those discussions as an actor? Because it's important for you as an actor to also know what sort of gaze am I looking at my character with. So how was that process for you? I'm trying to understand that. Okay. Sir, आप बदलना चाहोगे? एक्चुअली जो जातिवाद या कास्टिज्म है वो अभी भी है, सब जगह है. अब लोग बोलते नहीं है, बट लेकिन इनहेरेंट सब में है. बहुत लोगों में आजकल अगर आप किसी भी गांव, किसी भी शहर में जाएं तो वो है. हमने भी ट्राई किया है वो, बट बहुत सटल वे में. जिस तरह से है उसी तरीके से हम उसको प्रीच ही नहीं बनाया ऑन द फेस ऐसे, लेकिन है जो एक विद द फ्लो अगर वो चीज आ रही है उसी तरीके से बताया. उस पर ज्यादा हैमर करने की हमने कोशिश नहीं की. हाँ, एंड ऑफ द एपिसोड मेरे ख्याल से वो जर्नी वो ऐसे क्रिएट हो जाती है कि तब समझ में आता है कि यार ये एक्चुअली समाज में बहुत बड़ी चीज है. जो लोग उस जगह से आते हैं वो आज भी अपने मन में रखते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पे हो जाए, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन उसके आसपास वो ऐसा ही एनवायरनमेंट है, उसी तरीके से देखते हैं. तो वो हेमंत की जर्नी भी वही है, उस पहचान से लड़ने की. तो वो बहुत ही फ्लो में हमने उसको ट्राई किया है पोर्ट्रे करने. और वो ऑपरेशन की आप जो बात कर रहे हैं, उसका मेन क्या है पता है? I can't look at it as Bhuvan Arora. I really cannot look at it as Bhuvan Arora because then I will instantly start to feel sympathy. Yeah, exactly. That's what I'm saying. I have to keep myself aside. I now get your question. Sorry, I mistook it. But I have to keep myself aside. When I understand the part, I basically have to keep all of this aside and I have to put myself in an imaginary setup where the character's been through it throughout the life. Yeah. And it makes you immune. It makes you it gives you sort of certain kind of immunity to these things. The representation of it, I feel that, has also been very, I don't know, one-dimensional or monotone per se as such. But I think it's very two-sided. And I feel that, we've tried our best to sort of, balance that thing. That when an oppressed guy actually gets power, what does he do with that power? So I think when you see the show, you sort of... Yeah, there's a glimpse of it in the trailer. Yeah. You also become the animal you are not So if the show says it's the beast within. Yeah. So, and I'm sure there are the titles in between that say that, how much can you tame your beast? I feel there's a beast inside you right now while you talk to me. But you've tamed it down right now. Yeah. So people who don't tame it down become Hitler and do all sorts of things. I have last set of questions. Firstly for you, Bhuvan, we've seen you since you said Shuddh Desi Romance and over the years playing supporting roles, and this is really good to see you in a prominent main character role. Firstly, how does it feel to play the lead after a long time? Yeah, it's obviously good. See, I refrain from using these jargons. I feel that it sort of derails you from the crux of what I love to do. So, trust me, I've said this before and you can ask Sachin sir. हमने रीडिंग पहले दिन पे बोला था कि सर प्लीज कोई हीरो लीड ये सब के टर्म्स यूज ही नहीं करेगा. एंड ट्रूली आई नो प्रॉबेबली आई एम लाइक अ मोर नोन फिगर इन टर्म्स ऑफ द कास्ट, बट इट्स ट्रूली एन ensemble. I don't think so it's my show alone. I think the show is a collaborative show. A lot of other parts that you see on the posters and you'll eventually see in the show are very, very important and integral to the show. And I never took it like that. And I've done some work before which, probably the story which is probably from that person's perspective or the protagonist, for the lack of a better word, is that character. But some of it has come out, some of it has not come out, will come out after this. But I don't really, pursue that part with that conditioning in head. कि हाँ यार ये मेरे कंधे पर है ऐसे. But did you never desire to play
You all desire. You always want the story to be from your Yeah. perspective. I am not going to be a saint and tell you कि नहीं यार मैं तो खुश था जो मिल रहा था. मतलब ये झूठ है यार. Yeah. Everybody wants the story to be from their perspective. Yeah. I wanted that Yeah. for the longest time. That's what I was working for throughout the time I've been here. पर एंड ऑफ द डे आपकी अप्रोच क्या है उसको लेके. यार मेहनत तो मैं एक सीन के रोल में भी उतनी कर रहा हूँ और मैं मेहनत पूरे शो जो मेरे पे माउंटेड है उस पर भी उतनी ही कर रहा हूँ. मेरी मेहनत में कोई चेंज नहीं है. हाँ मतलब ऑब्वियसली आई जस्ट फील दैट कि जो मैंने एजुकेशन फॉर्मल ली है एक्टिंग की उसको यूज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है जब शो आपके पर्सपेक्टिव से होता है तो. So then you obviously feel more happier as an actor because you get to use your acting chops, the education that you've gained over the period of time. आपको उसको दर्शाने का better मौका मिल जाता है. So I just feel happier about that. And is there also this way of breaking the pattern, of breaking the image that the industry has set for you, typecasting you in a particular... I genuinely feel there is no image here. I really want to be in an image. Honestly, I don't think so. Anybody has put me in an image for now. I've actually. But you're getting similar roles for a while. No, but tell me 3 similar roles that I've done. As in supporting roles. So did it ठीक है, but करिए उसके बाद I did Fiseddi, I did Tatkal, it's gonna come out. Now I did Janavar. I have Dupaiya lined up, which was an ensemble. So I'm just saying that यार जब मैं फर्जी भी करने गया था ना जस्ट पहले दिन मेरे डायरेक्टर्स ने मेरे को सबसे पहली बात बोली थी इट्स अ 2-man जॉब. तो जब मेरे डायरेक्टर क्लियर हैं इस चीज को लेके जिनकी बेबी है यार इट्स देयर मीडियम इट्स नॉट माय मीडियम. आई एम नॉट वन ऑफ दोज एक्टर्स हु थिंक दैट दे आर अबव द स्क्रिप्ट और द फिल्म. ठीक है, आई एम ऑफ अ स्कूलिंग दैट आई फील दैट आई एम अ सर्वेंट टू द स्क्रिप्ट एंड दैट्स माय जॉब. आई एम वन ऑफ द प्रॉप्स दैट कैन प्रोबेबली ग्लोरीफाई द थिंग. पर मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे डायरेक्टर को अगर ये वो नहीं है प्रॉब्लम तो मुझे क्या प्रॉब्लम है यार. फेयर. मतलब मैं घर से सुबह उठ के ये तो सोचूंगा नहीं यार आज मैं सपोर्टिंग एक्टर वाली एक्टिंग करूंगा, आज मैं लीड एक्टर वाली एक्टिंग करूंगा. मैंने तो वही काम करना है यार. मैंने तो उतनी शिद्दत डालनी है. करेक्ट. ठीक है, तो और फिल्म करने के बतेरे रीजंस होते हैं. समटाइम्स यू पिक अ सपोर्टिंग रोल बिकॉज़ यू वांट टू वर्क विद द डायरेक्टर. Probably the project is paying you well. Probably the scale is very big. There are multiple reasons why you say yes to a film or a show for that matter. So I think I've been lucky to get my hands on a lot of things, and I'm sure with passing time people will see, and I hope I do justice to it. That's it. That's my only goal. कि यार मौके मिले को waste ना करूँ मैं. Perfect. Thank you so much for this lovely conversation. Thank you, man. Thanks. Great conversation. I wish you all the best. Thanks, man.